Good morning, students. In science, we are reading chapter 10, and in our today's topic is nature maintains a balance. So, I am sending a video for this. Now, how does nature maintains a balance between oxygen gas and carbon dioxide gas? Okay, both these gases are necessary, and how the balance is maintained. Okay. So animals and human beings use oxygen present in the air and give out carbon dioxide gas. Like animals and human beings use oxygen gas for what? For breathing, and give out carbon dioxide gas during the breathing. In our body, oxygen gas is needed to burn the food or decompose the food. After decomposition, carbon dioxide gas is produced inside our body, that is thrown out by breathing out. Okay, so we are taking in oxygen gas, and giving out carbon dioxide gas, animals into carbon dioxide gas in the air. Now what the plants are doing? Plants are absorbing carbon dioxide gas for photosynthesis, and after preparing food they are giving out oxygen into the air. Okay, so they are plants are absorbing carbon dioxide and releasing oxygen gas, and human beings and animals are taking in oxygen gas and giving out carbon dioxide gas. तो इस तरह से दोनों ही यूज हो रहा है, खपत हो रहा है, और दोनों ही बन रहा है. जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये खपत कर रहा है तो प्लांट्स दे रहा है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को खपत कर रहा है ये तो एनिमल्स दे रहा है. ठीक है, इस तरह से बैलेंस हमेशा ही मिल रहा है, दोनों बरकरार है. दोनों ही गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट फॉर ऑल टाइम्स because of respiration and photosynthesis. Balance is maintained, and there is no shortage of oxygen and carbon dioxide gas in the atmosphere or air. सो देखो, प्लांट्स ऑन द अदर हैंड कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स ले रहा है, देखो प्लांट्स कंज्यूमिंग मतलब एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स ऑन द अदर हैंड कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है. दे देन गिव आउट ऑक्सीजन. So after preparing food, they prepare glucose as their food and give out oxygen gas. They give out oxygen. In this way, a balance of carbon dioxide and oxygen is maintained in the air. इस तरह से हवा में दोनों का मात्रा बरकरार रहता है, कोई कमी नहीं रहता है. ओके, प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड वी आर यूजिंग इट. We are producing carbon dioxide and plants are using it. Okay, carbon dioxide gas is also produced by burning of fuels. कार्बन डाइऑक्साइड देखो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन लगता है, और आफ्टर बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, वो दिखाए थे एक्टिविटीज में. So this is about how nature maintains a balance of oxygen gas and carbon dioxide gas. So if you can draw the diagram. Now let us come to know another important gas, regarding another important gas, nitrogen. So what is the role of nitrogen? And that is how nitrogen is useful to plants or animals. So it is very useful to plants. देखो नाइट्रोजन गैस 78% है, वो 78% बेकार नहीं है, वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है. Nitrogen gas present in air is also essential for the growth of plants. So nitrogen gas is very needed for the growth of plants. Okay, nitrogen helps in the rapid growth of plants. बढ़ने में मदद करता है. And nitrogen gas helps. Mineral nitrogen is very helpful for the growth of plants. It also helps them to develop their fruits and seeds. बढ़िया फ्रूट्स है ना, अच्छा सा फ्रूट्स और सीड्स बने, उसके लिए भी नाइट्रोजन जरूरी है. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ देयर लीव्स. तो नाइट्रोजन मिनरल उसके लिए बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है. तो अगर मिल जाए तो उसका क्वालिटी बढ़ जाएगा, क्या पौधा का क्वालिटी और पत्ता का क्वालिटी. ओके, सो इट ऑल्सो इंक्रीजेज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ देयर लीव्स. प्लांट्स देयरफॉर रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट्स. इसलिए नाइट्रोजन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्लांट्स के लिए. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. अब एयर हैज और नाइट्रोजन इज देयर इन द एयर, बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली. सीधा हवा से वो नहीं ले पाएगा. तब कैसे ले पाएगा? तब इनडायरेक्ट मेथड में लेना पड़ता है उसको. कैसे? ना हवा वाला है ना, द नाइट्रोजन गैस विच इज प्रेजेंट इन एयर इज ब्रॉट डाउन टू द सॉयल में उसका कंपाउंड्स यानी सॉल्ट सब्सटेंस बनता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनता है. वो कंपाउंड्स वाटर सोल्यूबल होता है. वाटर सोल्यूबल होने के नाते रूट्स व्हेन एब्जॉर्ब वाटर, दोज
nitrogen compounds are also absorbed along with the water. And now the roots will absorb water, and hence these salts will also be absorbed. Salts of nitrogen will also be absorbed by the roots. तो देखो, our plants cannot absorb nitrogen directly from air. तो कैसे करेगा? तो नाइट्रोजन गैस हैज टू बी चेंज इनटू अदर फॉर्म्स टू बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स. तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसको दूसरा रूप में उसको कन्वर्ट किया जाता है. तो कैसे कन्वर्ट होता है? देखो, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, बैक्टीरिया आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एयर. ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल हेल्प टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सच ए स्पेसिफिक फॉर्म, nitrates and ammonium salts, into such specific forms like nitrates and ammonium salts. यानी नाइट्रोजन को बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है मिट्टी में, है ना. ये सब वाटर सोल्यूबल है तो पानी में घुला हो जाता है. रूट्स जब पानी ऑब्जर्व करोगे तो ये भी चला जाएगा प्लांट का बॉडी में. तो दीज सॉल्ट्स आर टेकन इन बाय प्लांट्स टू गेट नाइट्रोजन नीडेड बाय देम. So these salts are taken in by plants along with water to get nitrogen needed by them. The plant roots absorb these salts from the soil. Plant roots absorb these salts. कौन salts? ये nitrogen salts. Nitrogen है ना, nitrate and ammonium salts contain nitrogen. So they absorb these salts and get the nitrogen from the soil. Plants then plants then use them to form proteins which are essential for their growth. So nitrogen is essential for the synthesis of protein or making of proteins in their body, in the body of the plant. इस तरह से जो एयर में नाइट्रोजन है वो मिट्टी में चला गया और मिट्टी से फिर प्लांट का बॉडी में चला जाता है. ठीक है, एक तो इसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है. नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है? इनडायरेक्टली. डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है ना, नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. एयर में नाइट्रोजन है, सो दैट इज एब्जॉर्ब बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल, है ना. बैक्टीरिया इन द सॉइल एक्ट्स ऑन नाइट्रोजन, यानी बैक्टीरिया एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन गैस एंड मिक्सेस इन द सॉइल. नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक फॉर्म्स. अब सॉइल में क्या हो जाएगा? सॉइल में और अदर मिनरल्स आर आल्सो देयर. देख, नाइट्रोजन कंबाइंड्स विद अदर मिनरल्स फॉर्मिंग सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन like nitrates and ammonium salt. ठीक है, these are water soluble and can be absorbed by the roots. So salts हो गया. such specific forms of nitrogen salts get absorbed by plants for their growth. तो प्लांट एब्जॉर्ब करता है और फिर नाइट्रोजन को सब सॉल्ट से नाइट्रोजन निकालकर प्रोटीन बनाता है. सो दिस इज हाउ नाइट्रोजन इज यूजफुल फॉर दी प्लांट्स. ओके.